Hello everyone, welcome to V Classes and Vipin Sir English वाले channel दोस्तों. I know you all are too much upset by me because I'm not creating the video regularly. So guys, for that just forgive me. Actually, I'm too much busy nowadays. I'm not having that time, so I can create the video regularly. But I will try to continue to create the video. And who are just messaging me to create the video and that who wants to learn the spoken English, so they are just missing my videos. So guys, really I'm so sorry for that. But being a teacher, it's my responsibility to create a video for you student that who wanna learn spoken English. So guys, it's a wonderful day today. I'm going to tell you a wonderful news, and you know what? Here you are going to learn something. So you can see here what is written here. अध्यापक होने के नाते just I have missed one word here. What अध्यापक होने के नाते मैं अपने छात्रों से प्यार करता हूँ. Right, just mind that sentence. पिता होने के नाते मैं उसको समझाता हूँ. पिता होने के नाते मैं उसको समझाता हूँ. छात्र होने के नाते मैं रोज कुछ नया सीखता हूँ. So guys, these are the very simple use. मतलब यहाँ पे एक वर्ड आता है ना कॉमन, यहाँ पे आप देख सकते हैं नाते नाते, मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है ना. So guys, what we use here? So simply that we can use that use of being. लाइक बीइंग अ फादर, जैसे यहाँ पे व्हाट इज द फर्स्ट सेंटेंस है, अध्यापक होने के नाते मैं अपने छात्रों से प्यार करता हूँ. तो बीइंग अ टीचर आई लव माय स्टूडेंट, राइट. पिता होने के नाते मैं उसको समझाता हूँ. सो बीइंग अ फादर आई मेक हिम, या देखो आई मेक हिम टू अंडरस्टैंड कह सकते हैं, या आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं आई गाइड हिम. एंड द लास्ट वन, छात्र होने के नाते मैं रोज कुछ नया सीखता हूँ. बीइंग अ स्टूडेंट, लाइक बीइंग अ student, I learn something new daily. So guys, these are the very simple use that which you can create. मतलब कुछ भी हो, जैसे कोई भी नाता है, जैसे एक अच्छा व्यक्ति होने के नाते तुम्हें लोगों की मदद करनी चाहिए. Being a good people, you should help the people. And एक अच्छे इंसान होने के नाते तुम्हें हमेशा लोगों की हेल्प करनी चाहिए. So simple, you should help the people. Being a good person, कोई ज्यादा टिपिकल जॉब नहीं है. But for that you can use just being a father, being a friend, being a student, that you can use it. So guys, आपको ये समझ आया होगा. समझ आया तो वीडियो को लाइक करो ना. Don't forget to share this video because these videos are helping to the people too much. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक दोस्तों जय हिंद.